Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 26. The name of the paper is Introduction to Linguistics. The chapter is Syntax and the topic is Structural Ambiguity. This lecture is specifically for the students of BA second semester GDC PABI and also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The topic is Structural Ambiguity and we are doing it from the Study of Language by George Young. Page number is 98. So you can check it in your book too, in your books too. Structural ambiguity to some extent has already been discussed in lecture number 25th. We will do the detail of structural ambiguity here. Ambiguity means unclarity, that the structure of a sentence is not clear, its semantics is also not clear. If we take this sentence, this is the surface structure. Annie bumped into a man with an umbrella. Now, of course it was Annie who bumped, but we don't know whether umbrella was with the man or with Annie. Therefore, this is the surface structure, the meaning of which can be in the mind of Annie or in the mind of the speaker of this sentence. And this surface structure, as we have discussed in previous lecture also, can have different or multiple deep structures. For example, the two clear-cut and distinct deep structures are Annie had an umbrella, now it becomes clear who had it, and she bumped into a man with it. The second deep structure is this one, that Annie bumped into a man and the man happened to be carrying an umbrella. These explanations or these deep structures will be in the mind of the one who is speaking this sentence. This spoken form is therefore the surface structure, and this explained form in the mind is the deep structure. But you can see the ambiguity and the unclarity here is with reference to the umbrella, that whether it was the man who had the umbrella or Annie who had the umbrella. Such a confusion is referred to as structural ambiguity. Sometimes the structural ambiguity also can create a kind of humor. For example, if we take this sentence by Marx, who intentionally made it unclear. For example, he said, I once shot an elephant in my pajamas, and then said how he got into my pajamas I'll never know. This ambiguous sentence, ambiguous in the sense that we don't know whether the elephant was in the pajamas or whether it was outside. So this surface structure has two deep structures, the underlying structures. For example, one of the underlying structure is I shot an elephant while I was in the pajamas. This is one structure. And the other is I shot an elephant which was in the pajamas. So these two different underlying structures with the same surface structure. The surface structure is one, but the deep structures are two. Sometimes we have one deep structure with multiple surface structure, as we have done in lecture number 25th. Phrases also can be ambiguous. For example, if we take this phrase, small boys and girls, it can mean small boys and small girls, and it can mean small boys and all girls.
when this epithet small is not attached with the girls, and therefore all the girls are meant. So phrases can also be ambiguous. इसको उर्दू में समझें, एक शॉर्ट लेक्चर है और इसको रीड भी करते हैं. हम एक सरफेस स्ट्रक्चर ले रहे हैं, मसलन Annie bumped into a man with an umbrella. अब ये सेंटेंस बोल दिया गया है, ये एक सरफेस स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी एक्चुअलिटी वजह, इसका मतलब है एनी टकराई एक आदमी के साथ. अब ये पता नहीं अम्ब्रेला, एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला, कि ये अम्ब्रेला किसके साथ था ये हमें पता नहीं है. तो इसकी जब वजाहत एनी के जहन के अंदर है, लिहाजा ये जो जहन के अंदर है ये वजाहत डीप स्ट्रक्चर होगी. और एक वजाहत ये होगी एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प्ड इनटू द मैन विद इट, और दूसरी वजाहत होगी एनी बम्प्ड इनटू अ मैन एंड द मैन हैपेंड टू बी कैरिंग एन अम्ब्रेला. तो एक में तो ये वजाहत जब हो जाएगी जो कि जहन में मौजूद है, तो ये दो डीप स्ट्रक्चर एक सरफेस स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, और इसी को स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी कहते हैं. कभी कभार ये बड़ी मजाक का भी सबब बनता है और कस्दन भी बोला जाता है. मसलन ये एक सरफेस स्ट्रक्चर है, आई वंस शॉट एन एलिफेंट इन माय पजामास. अब ये इसके जहन में है कि पजामाज में ये था, ये पजामाज में एलिफेंट था. तो जो जहन में है वो डीप स्ट्रक्चर है, और वो एक ही है शॉट एन एलिफेंट व्हाइल आई वाज इन पजामास, और दूसरा ये है शॉट एन एलिफेंट व्हिच वाज इन माय पजामास. तो अंडर डीप स्ट्रक्चर को अंडरलाइंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ये एक सरफेस स्ट्रक्चर के दो डीप स्ट्रक्चर हैं, और किसी एक डीप स्ट्रक्चर के दो सरफेस स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जिस तरह एक्टिव और पैसिव में हमने पढ़ा है. फ्रेजेस का भी यही हाल है, ये भी डीप और सरफेस हो सकते हैं. मसलन स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स, ये सरफेस स्ट्रक्चर है, जुमला बोल दिया गया है, लेकिन बंदे के मगज के अंदर मौजूद है कि उसकी मुराद स्मॉल बॉयज और स्मॉल गर्ल्स हैं या स्मॉल बॉयज और ऑल गर्ल्स हैं. तो ये इस हवाले से दो डीप स्ट्रक्चर एक सरफेस स्ट्रक्चर के हुए, लेकिन ये एक फ्रेज के हैं. तो हम इसको पढ़ते हैं. लेट्स से वी हैव टू डिस्टिंक्ट डीप स्ट्रक्चर्स. फर्ज करें हमारे पास दो वाज़ेह डीप स्ट्रक्चर्स हैं. वन एक्सप्रेसेस द आइडिया. एक डीप स्ट्रक्चर में आइडिया ये है एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन विद इट. एनी के पास अम्ब्रेला है, वो एक आदमी के साथ टकराई. The other expresses the idea that Annie bumped into a man and the man happened to be carrying an umbrella. कि Annie एक आदमी से टकराई और आदमी के पास अम्ब्रेला था. Now these two different versions of events, ये दो मुख्तलिफ versions हैं एक event के, can actually be expressed in the same surface structure form. इसका एक structure form हो सकता है, वो ये है Annie bumped into a man with an umbrella, जो कि clear नहीं है. This sentence provides an example of structural ambiguity. इस जुमले में structural ambiguity है, ये इसकी example है. It has two distinct underlying interpretations. इसकी जो deep structure की interpretation है वो दो हो सकती हैं, that have to be represented differently in deep structure. और इसको differently represent किया जाएगा deep structure में, एक ये वाला और एक ये वाला. The comedian Gokul Marx, comedian था, knew how to have fun with structural ambiguity. उसको पता था structural ambiguity को कैसे मजाक के लिए इस्तेमाल करें. In film Animal Crackers, इसकी मूवी है, he first says I once shot an elephant in my pajamas. मैंने अपने पजामाज में elephant को मारा. Then follows it, फिर कहता है how he got into my pajamas I'll never know. ये मेरे पजामाज में कैसे दाखिल हुआ ये मुझे नहीं पता. In the non-funny interpretation,
जो serious interpretation है, part of the underlying structure of the first sentence could be something like, जो underlying sentence है, जो underlying structure है, उसका एक हिस्सा यूँ होगा, I shot an elephant while I was in my pajamas. मैंने elephant को मारा जबकि मैंने पजामा पहना हुआ था. In the other ho-ho interpretation, Mazaya interpretation, part of the underlying structure would be something like, तो ये होगा underlying structure, deep structure. I shot an elephant which was in my pajamas. मैंने elephant को मारा और elephant मेरे पजामे में था. There are two different underlying structures with the same surface structure. दो underlying structure हैं, एक surface structure है. दो deep structure हैं, एक surface है. Phrases can also be short, structurally ambiguous. Phrases भी structure के हवाले से ambiguous हो सकती हैं, as in expressions like small boys and girls. जैसे small boys and girls हैं, ये phrase है. The underlying interpretation can be either small boys and small girls. ये deep interpretation, deep structure. Small boys and all girls, ये दूसरा deep structure. Or syntactic analysis will have to be capable. Syntactic analysis इस काबिल होगी of showing the structural distinction between these two, between these underlying representation, कि वो underlying representation के बारे में हमें बता सके. Thank you and good luck.